Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 7. The name of the paper is Introduction to Literature 2, and the topic is types of novels. And in types of novels, we will discuss historical novel and picaresque novel. This lecture is specifically for the students of BS second semester GTC Public and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. These are your notes, and you already have these notes. The historical novel, as the name indicates, deals with historical events and with the events of the time, so the time is also included there. Therefore, the action often takes place during a specific historical period, well before the time of writing, and it depicts and it shows accurately the customs and mentality of the period. So it talks about the specific historical period, and it tells you about the customs and mentality of that specific period. The central character in historical novel is it can be real and sometimes it can be imagined. The pioneers of such writings of historical novels are Walter Scott and James Cooper. They were the ones who started it, and Scott's historical novels started with Waverley, and it is also the hero's name. This is the about the content of this novel. You can read it for yourself. We don't have much time. If you don't want to read it, you can just remember Waverley. This novel and his other novels set the pattern for hundreds of others, and they followed it. Then we have Victor Hugo's Notre Dame de Paris, which means Our Lady of Paris, and Dumas Pierre's Les Trois Musketeers, very famous in the English translation as The Three Musketeers. You can even watch a movie named The Three Musketeers, a very sensational movie. And then Flaubert's Salambo. These are very strange names of the novels. And this one is by Tolstoy, and the name of the novel is, it's a voluminous novel, War and Peace, and very famous. The original was written in Russian language in 1863 up to 69. So this is a short note on historical novel. I'll read it for you and translate it for you. ये हिस्टोरिकल नावल में, जैसे नाम से ज़ाहिर है, तारीख़ी टाइम और तारीख़ी वाक़यात को बेस बनाया जाता है. ज़ाहिर है ये है तो नावल ही, और इसमें इमेजिनरी इंसिडेंट होंगे, लेकिन टाइम एंड प्लेस ये सेलेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल, और कभी कभार हीरो का नेम भी वही होता है जो उसमें होता है. जैसे कि आजकल आप ड्रामा देख रहे अर्थरल का, तो ये एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है और ये एक्चुअल कैरेक्टर गुजर चुका है, लेकिन जो कहानी है इसमें इन्होंने मिर्च मसाला डाला हुआ है. तो एक्चुअल अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो 1-2 पेजेस होंगी, लेकिन ड्रामा में इसको डालने के लिए इन्होंने उसी बैकग्राउंड को शो किया है. और तरुल ड्रामे में भी वो ड्रामा है, हम नावल की बात कर रहे हैं, इसमें फ़र्क है, लेकिन बहरहाल स्टोरी तो दोनों में होती है और टाइम एंड प्लेस भी दोनों में होता है. तो आप देख सकते हैं उसमें ड्रेसेस भी उसी ज़माने के हैं और कुछ इंसिडेंट्स एक्चुअल हैं हिस्टोरिकली, और कैरेक्टर्स भी कुछ एक्चुअल हैं, हिस्टोरिकली गुजर चुके हैं. तो ये उस ज़माने की, अगर आप कस्टम्स देखें
तो अर्थरुल ड्रामे में वो कस्टम्स भी इसी ज़माने के हैं। वो चम्मच निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डालते हैं और चम्मच भी इस तरह निकालते हैं गोया तलवार निकालते हैं। तो उस ज़माने की मेंटेलिटी और दोगलापन कद्दूगली की शक्ल में ये सारा इस तरह, तो ये एक मिसाल हो सकती है। लेकिन वो ड्रामा है, हम नावल की बात कर रहे हैं। कैरेक्टर्स रियल भी होते हैं, कैरेक्टर्स इसमें इमेजिन्ड भी होते हैं। और वाल्टर का स्कॉट ने इसको शुरू किया, जेम्स कूपर ने भी इसको शुरू किया इसने, और ये फिर नाम है आपको याद रखने पड़ेंगे। ये वैसे तो रटना पड़ता है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि इसको रट लें तो फिर आपको स्टोरी इसकी पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है इंटरनेट से, आप इंटरनेट जाकर पढ़ सकते हैं इसकी फुल कहानी। तो ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इट इज़ दैट टाइप ऑफ नावल, ये उस किस्म का नावल है इन विच द एक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पीरियड। जो एक्शन होता है वो एक खास हिस्टोरिकल पीरियड में होता है, वेल बिफोर द टाइम ऑफ राइटिंग, और राइटिंग से कई पहले गुजर चुका। अब अगर अर्थरुल किसी ने लिखा है तो अर्थरुल तो कई ज़माना पहले की बात है। ऑफन 1 or 2 generations बिफोर, कभी तो 1-2 जनरेशन पहले की बात होती है, समटाइम्स सेवरल सेंचुरीज, और कभी सेंचुरी सदियां पहले की बात होती है। एंड इन विच सम अटेम्प्ट इज मेड टू डिपिक्ट एक्यूरेटली, और कोशिश ये की होती है कि नक्शा खींचा जाए सही तौर पे किस चीज़ का, द कस्टम्स उस ज़माने के रिवाजों का, एंड मेंटेलिटी ऑफ द पीरियड उस ज़माने की जो मेंटेलिटी है उसका। द सेंट्रल कैरेक्टर रियल और इमेजिन्ड हो सकता है, इज यूजुअली सब्जेक्ट टू डिवाइडेड लॉयल्टीज, उसकी जो वफादारियाँ होती है डिवाइडेड होती हैं, क्योंकि विद इन ए लार्जर हिस्टोरिक कॉन्फ्लिक्ट, और एक बड़ा हिस्टोरिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, तजाद पाया जाता है, लड़ाई होती है, ऑफ विच रीडर्स नो द आउटकम, और रीडर को उसका नतीजा पता है क्योंकि तारीख में रीडर पढ़ चुका है कि होगा क्या। द पायनियर्स ऑफ द जॉनरा वर वाल्टर स्कॉट एंड जेम्स कूपर, ये इसके पायनियर्स थे और मुजिद थे। स्कॉट्स हिस्टोरिकल नावल स्टार्टिंग विद वेबरली, ये उसका पहला नावल था। हीरो का नाम भी 1814 में लिखा गया। सेट द पैटर्न फॉर हंड्रेड्स ऑफ अदर्स, सैकड़ों औरों के लिए पैटर्न सेट हो गया। आउटस्टैंडिंग 19th सेंचुरी एग्जाम्पल्स इंक्लूड, अच्छी एग्जाम्पल्स 19वीं सदी में विक्टर हगोज की नोटर डेम डी पेरिस, यानी आर लेडी ऑफ पेरिस, ये एक नावल है हिस्टोरिकल। ड्यूमस पेरिस लेस्ट्रॉयस मस्केटियर्स, ये इसका इंग्लिश तर्जमा थ्री मस्केटियर्स है। ये इसकी पे मूवी भी बन चुकी है, अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, एक सेंसेशनल मूवी है। और फ्लाबर्ट्स की सलाम्बो है, ये भी एक हिस्टोरिकल नावल है। मशहूर एक नावल लियो टॉल्स्टॉय की है, वॉर एंड पीस, बहुत वॉल्यूमिनस बुक है, ओरिजिनली रशियन में है। While the historical novel attempts a serious study of the relationship between personal fortunes and social conflicts, ये स्टडी होती है पर्सनल फॉर्चून्स, आपकी ज़ाती फॉर्चून्स और किस्मत की, और सोशल कॉन्फ्लिक्ट, समाजी लड़ाइयों की। द पॉपुलर फॉर्म नोन एज द हिस्टोरिकल और कॉस्ट्यूम्ड रोमांस, एक मशहूर जो है वो कॉस्ट्यूम रोमांस है, हिस्टोरिकल रोमांस भी है। टेंड्स टू इम्प्लॉय द पीरियड सेटिंग, तो उसमें उस पीरियड की सेटिंग तो होती है, लेकिन ये सेटिंग ओनली एज डेकोरेटिव बैकग्राउंड, सिर्फ डेकोरेशन के तौर पे आता है टू द लीडिंग कैरेक्टर्स, और लीडिंग कैरेक्टर इसको इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वाज अबाउट द हिस्टोरिकल नॉवेल्स। Historical novels talk about the history and about the time and place of that time, that specific time. There are many examples. One of the examples is also A Passage to India by Foster, which is placed in the time before Pakistan was born. That is also a historical novel, and all these other examples. The next type is the picaresque novel. The picaresque is from the word
picaroon or Spanish word picaro, which means rogue or scoundrel. That is loafer, badmash, घूमने वाला. That is the meaning. So it is that type of novel in which we have a picaroon. Picaroon is a rogue, is a scoundrel, and he or she is the hero, that scoundrel, that rogue. And the narration often is first person narration, you know the narrative technique. The structure of the plot is episodic structure, that is, one episode is not causally attached with the other episode, and one episode is a story in itself, a separate one. They are attached with each other just because there's only one hero or central character, and it is mostly about realistic low life, the life of the poor people that is described in it. It is often realistic. The picaroon or the main character is quite quick-witted, very intelligent, and he is often a servant. He performs different performances, actions there. There is succession of employers with whom he works, and one of the examples is Lazzarello di Tormes. This is anonymous. It is French and anonymously written. Nobody knows who wrote it. This is an example. The story of this is given here in the small letters. You can read it for yourself. We don't have much time. I often used to tell the stories and I enjoyed telling these stories, but I'm sorry I cannot narrate it here now because of the time factor this time. And by Mateo Alemans, more widely influential, he wrote Guzman de Alfrache. These not English words, so it doesn't matter how you pronounce it. Google gives you the pronunciation of these words. So these are the different examples. This is its story. You can read it from here. You can read it from internet as well. And then there is the other by John. He wrote this one. It is the German language. I cannot pronounce it. You pronounce it as you wish. For example, Grammel, Hausins, simply CC and it is up to you how to pronounce it. I'm sorry, this is not the correct pronunciation because it is German. You can write it in Google and write in front of it pronunciation, and from there you can get it. There is this one, Leon Rene, and again the pronunciation I'm not sure about that. This is in French, and this one is English now. Daniels Defoe, Mal Flanders, it is in English. These are the examples of picaresque novel. There are other examples in the looser sense. So these are the examples. I will do now this thing for you in Urdu, and then I'll read it out for you. पिकारेस्क नॉवेल जो है इसमें आपको पिकारून मिलेगा. पिकारून पिकारो स्पेनिश लफ्ज है. रॉक स्काउंड्रल बदमाश लोफर घूमने वाला है, कभी एक जगह कभी दूसरा. नरेशन इसकी अक्सर फर्स्ट पर्सन की होती है. प्लॉट इसका एपिसोडिक होता है, जिसका मतलब ये है कि हर एपिसोड अलग अलग माना दे सकता है और इसकी जो यूनिटी है वो ऑर्गेनिक नहीं होती. ये रियलिस्टिक लो लाइफ, गरीबों की ज़िंदगी, रियलिस्टिक लाइफ शो करता है. पिकारून अक्सर बड़ा ज़हीन होता है, अक्सर सर्वेंट होता है, कई मालिकों के साथ काम करता है. और जो एग्जाम्पल है इसकी रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल वो लाज़ारेलो डी टोर्मेज है. ये एनोनिमस है और फ्रेंच नोवेला है. इसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन और सारा ये नीचे दिया हुआ है स्मॉल वर्ड्स में. एंड बाय मैथियो एलेमेंस, ये नेक्स्ट है. सारे इंग्लिश नेम्स नहीं है. और इसने लिखा गोजमैन डी अल्फराज. तो
اور اس کی بھی اسٹوری نیچے دی ہوئی ہے, آپ خود پڑھیں گے. یہ میں پڑھایا کرتا تھا, لیکن آپ صرف ایگزامپل بھی یاد رکھیں, ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو ہم آگے جائیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی ایک امیٹیٹر ہے, یہ چونکہ جرمن لینگویج کا ہے, اس کا بھی پروننسیشن عجیب و غریب ہے, آپ کو یاد رہتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس ایگزامپل کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. انگلش ایگزامپل دیں, آسان ہے, یہ ہے ڈینیل ڈیفوز مال فلانڈرز, اور آپ کو موقع ملتا ہے تو اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, اس کی سمری پڑھ سکتے ہیں, نیٹ پہ اویلیبل ہے, ان کی موویز بھی اویلیبل ہے, تو یہ سر آپ کر سکتے ہیں. I will read it for you. In the strict sense کے لحاظ سے picaresque novel is a novel with a picaroon. یہ وہ ناول ہے جس میں پیکارون ہوگا, اسپینش پیکارو سے لیا گیا ہے. اراگ اور اسکاؤنڈل اس کا مطلب ہے ایز اٹس ہیرو اور ہیروئن, یہ اس کا ہیرو ہیروئن ہو. یوزولی ریکاؤنٹنگ, اور اکثر یہ بیان کرتا ہے پیکارون his or her adventures, اپنے ایڈونچرز کو, مہمات کو, in a first person narrative. اور جو نریشن ہے وہ عموماً فرسٹ پرسن میں ہوتی ہے. مارکڈ بائی اٹس, اور اس کی جو کیریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے ایپیسوڈک اسٹرکچر. اس کا اسٹرکچر ایپیسوڈک ہوتا ہے, یعنی اس کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آرگینکلی اٹیچ نہیں ہوتے. اینڈ ریئلسٹک لو لائف ڈسکرپشنز, اور یہ ریئلسٹک غریب لوگوں کی زندگی بیان کرتا ہے. The picaroon is often a quick-witted servant, یہ چالاک سرونٹ ہوتا ہے. Who takes up with a succession of employers, وہ بہت سارے مالکوں کے ساتھ کام کرتا ہے. True Spanish picaresque novel is represented by the anonymous Lazarillo de Tormes, یہ اس کا نام ہے. آپ صرف Lazarillo یاد رکھیں, صرف de Tormes یاد رکھیں تو بھی کافی ہے. یہ اس کی نیچے سٹوری دی ہوئی ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو, اور مجھے پتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بھی تو جب تک میں نہ پڑھوں آپ خود نہیں پڑھتے. اینڈ بائی میتھیو, مور وائڈلی انفلوئنشل, گوزمان ڈی الفاراشے, یہ ایک نیکسٹ ناول ہے, اور چونکہ انگلش نہیں ہے تو نام عجیب سا ہے. یہ اس کی سٹوری ہے. اور نیکسٹ جو ہے تو ڈینیل ڈیفو آپ لے سکتے ہیں, مال فلانڈرز کی. ان دا لوزر سینس, تو وہ تو اسٹرکٹر سینس تھا. لوزر سینس میں نا مور فریکوینٹلی یوزڈ, اس کو اکثر استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو ٹرم ہے پیکارسک ناول کا, دا ٹرم از اپلائڈ ٹو نیریٹیوز, ایسے نیریٹیوز پہ یہ لاگو ہوتا ہے that do not have a picaroon, ضروری نہیں اس میں پیکارون ہو as their central character, مرکزی کردار کے طور پر. but are loosely structured, اس کا اسٹرکچر لوز ہوتا ہے جو ہم نے پہلے بھی بتایا. اس کے انسیڈنٹس لوزلی اٹیچ ہوتے ہیں ایز اے سیکوینس آف ایپیسوڈس, اور یہ سیکوینس ہوتا ہے ایپیسوڈس کا جس میں آرگینک یونٹی نہیں ہوتی. یونائٹیڈ اونلی بائی دی پریزنس آف دا سینٹرل کیریکٹر, مرکزی کردار صرف یونائٹ کرتا ہے اس کو. اضافہ لانگ جرنی, اکثر یہ لمبے سفر کرتا ہے. سروانٹیز ڈان کیحوتے, اس کو عجیب تلفظ ہے اس کا, یہ چونکہ اسپینش ہے تو اس کو عجیب پڑھتے ہیں, ڈان کیحوتے پڑھتے ہیں اس کو. یہ سٹوری ہے بڑی انٹرسٹنگ اور مزاحیہ سٹوری ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو ٹائم ملے تو. ہنری فیلڈنگز کی ٹام جونز بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کے کورس میں بھی شامل ہے اور یہ آپ بعد میں پڑھیں گے. یہ بھی اس میں ٹام جونز میں بھی کوالٹیز ہیں اس قسم کے ناول کی, پیکارسک ناول کی. اینڈ مارک ٹوائنز ایڈونچرز آف ہکلبری فن مشہور ہے, are examples of novels that are referred to as being wholly or partly picaresque in this sense. تو یہ یا تو مکمل پیکارسک ہے یا کچھ پیکارسک ہیں, اس میں ٹام جونز مکمل پیکارسک نہیں ہے. While Byron's narrative poem Don Juan is a rare case of picaresque story in verse. یہ ورس میں ہے تو ورس میں ناول نہیں ہوتا, لیکن یہ پیکارسک سٹوری ہے اور ورس میں ہے. The requirements for a picaresque novel are apparently length, تو اس کی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ لمبا ہوگا. Loosely linked episodes, اس کے ایپیسوڈز لنکڈ زیادہ اچھی طرح نہیں ہوں گے. Almost complete in themselves, بلکہ ہر ایپیسوڈ الگ الگ ہوگا. Intrigue,
साजिशें होंगी, फाइट्स, amorous adventures या sexy adventures, and such optional items as stories within the main narrative. Story within the story. जब तक हम बाज नॉवेल्स नहीं पढ़ लेते जिनमें ये स्टोरीज विद इन स्टोरीज है, इसका समझना थोड़ा सा मुश्किल है। फिलहाल आप इसको याद ही करें। सॉन्ग्स कभी कभार, पोएम्स और मॉरल सरमन्स ये हो सकते हैं, रेयरली, नॉट ऑफन। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं पिकविक पेपर्स की है, जो कि पिकारेस्क नावल से मिलता जुलता है। आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं तब भी ठीक है, मैंने तो आपको एक स्टोरी यहाँ पे दी हुई है। So that was all about these two types. We will do many more types. These were the two types, historical novels and picaresque novel. After this we will study and discuss a sentimental novel. This is one type which we will discuss, and after this we will discuss Gothic novel. There are many types, many different types. Stories are also given here, and these are in small letters. Psychological novel will be discussed, the novel of manners, epistolary novel, pastoral novel, apprenticeship novel, or Bildungsroman novel. So we will discuss, there is this novel also, we will discuss them. So that much is enough for you. These two types. The first type is historical novel, and the next type we discussed was the picaresque novel. Thank you and good luck.